तेरी चरणा बीच लगी रहे याद साड़ी। सतगुरु जी दर्श दिखाओ सुन के फरियाद साड़ी। आए माँ तेरे दर पे सुनियो आवाज साड़ी। सतगुरु जी दर्श दिखाओ सुन के फरियाद साड़ी। नाम तो बगैर बंदा नहीं किस काम दा। जिंदगी तेरी नाम भरोसा एकदम दा। नाम तो बगैर बंदा नहीं किस काम दा। जिंदगी तेरी नाम भरोसा एकदम दा। नाम तो बगैर बंदा नाम तो बगैरा बेकर जिंदगी नवे। हरियाणा गुरु की कमाई इंसानी वे। नाम तो बगैरे पे तुमक जिंदगी नवे। हरियाणा गुरु की कमाई इंसानी वे। दिया बंदे आवे मानविच आवीना। दीन तेरे सास हम बीन सकनाए तेला एक चमदा। जिंदगी है तेरी नाम भरोसा एक नमदा। नाम तो बगैर बंदा नहीं किस कम दा। जिंदगी है तेरी नाम भरोसा एक नमदा। नाम तो बगैर बंदा आइए बारे पुत्ता तेनू गारे बच तंगेया। नाम नू बुला कि आओए तू आज दीन संगेया। आइए बारे पुत्ता तेनू गारे बच तंगेया। नाम नू बुला कि आओए तू आज दीन संगेया। विगुरिया दी कल काली रोंदाए। भोगलो चुरास बिच नारदा पौंदा ए। नाम जपने नु दिल आज दीन मांगदा। जिंदगी तेरी ना भरोसा एक दमदा। नाम तो बगैर बंदा नहीं किस काम दा। जिंदगी तेरी ना भरोसा एक दमदा। नाम तो बगैर बंदा बुल्ला बुल्ला पानी दा नहीं काम दा वस्या वे। हीरे आया जावे कोटिया दिवावे। बुल्ला बुल्ला पानी दा नहीं काम दा वस्या वे। हीरे आया जावे कोटिया दिवावे। दूर तो बगैर बे दूर दुख पावेंगा। नाम सच दीन ताके मुंगार कर चुकावेंगा। अज भी है वेला बांधे क्यों नहीं मानता। जिंदगी तेरी नाम भरोसा एक दमदा। नाम तो बगैर बंदा नहीं किस काम दा। जिंदगी तेरी नाम भरोसा एक दमदा। नाम तो बगैर बंदा सत्संग गुरु सच्चा नाम प्यारा है। दरगाह बीच अंत में सदा सहारा है। सत्संग गुरु सच्चा नाम प्यारा है। दरगाह बीच अंत ये सदा सहारा है। गुरुदेव चलने ते जो सिख चलेगा। सच कंद बार दार वाचा मारदा। कृपा ना अजब किस काम दा। जिंदगी
जिंदगी तेरी ना भरोसा एकदम मंदा नाम तो बगैर मंदा नहीं किसे कम दा जिंदगी तेरी ना भरोसा एकदम मंदा नाम तो बगैर मंदा एक बार की बात है, क्योंकि गुरु नानक का नया नया प्रचार था, तो लोगों को संत मत की उतनी जानकारी नहीं थी जितना कि आज कल है। गुरु नानक के This is once upon a time. The teachings of Guru Nanak Sahib then were new, and he had just started explaining the principles of Santmat. तो कहते उस समय उतना प्रचार नहीं था जितना आजकल है। तो लोग आप नाम लेते तो अपने घर वाले को दिला देते थे, जिनको उनके ऊपर भरोसा नहीं होता था, फिर वो लोग क्या करते थे, अपने मन के दायरे में कर्म करना छोड़ते नहीं और खाना पीना और फिर मलिन कर्म करना, इस तरह से अपने पाप बढ़ा लिए थे। एक जीव ऐसा बढ़ा लिया और गुरु की तवज्जो उससे हट गई, उसकी तवज्जो गुरु से हटी, गुरु की तवज्जो उससे हट गई। तो इतना कर्म मलिन होने से सत्संगी है, लेकिन मलिन कर्म होने से अंत समय यमदूत आके उसको ले जाके नरक में डाल दिया, कुंभी नरक में डाल दिया। So the teachings were new, and whoever would get initiated, he would have all his near and dear ones forcefully initiated. And though many times people would just get initiated, and though they would continue to go on their same ways of eating uh, non-vegetarian food or doing all kinds of bad karmas. So one such jiva uh, got initiated by Guru Nanak Sahib, but there was no change in him, and he continued to go about as his mind said, and he did all kinds of karmas. He did not remember Guru Nanak Sahib also, and the attention of Guru Nanak Sahib on him was also not there. So that way, he didn't have any attention on Guru Nanak Sahib, and Guru Nanak Sahib didn't have any attention on him. And at the time of death, his karmas were so heavy that the angels of death came and took him and put him in the Kumbhi Narak, or put him in hell. It is one type of hell. तो बाद में नारद की सवारी, त्रिलोक संचारी थे, तो एक बार जब नरकों की तरफ गए नारद, तो देखा एक संतों का जीव, जिसको संत कहते हैं कि वो नरक में जाता नहीं, कबीर साहब ने कहा है। तो ये जीव नरक में कैसे आ गया, उनको आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने अंदर में जाके गुरु नानक को सूचना दिया कि आपका एक जीव कुंभी नरक में ऊपर नीचे कर रहा है। So there was Narad Muni, and he used to transcend all the three worlds. And when he passed by this place, he saw and wondered how this soul, which is initiate of Guru Nanak Sahib, how is it that this soul is in hell?
because Kabir Sahib also says that once an initiate, he will never go to hell. So he contemplated within and he told Nanak Sahib about it. तो गुरु नानक ने आंख बंद करके देखा तो गलती हो गई। गुरु का तवज्जो उससे, उसका तवज्जो गुरु से, गुरु का तवज्जो उससे हट गया, तो ध्यान में नहीं रहा और यमदूत अपना जीव समझ के ले जाके डाल दिए। तब गुरु नानक वहाँ पहुँचे तो धर्मराज आके रास्ते में खड़े हो गए कि महाराज ये आपका जाने का स्थान नहीं है। तो कहते नहीं, हमें देखना है कि व्यवस्था कैसी है। कहते नहीं महाराज, आप दया करो, आपके जाने का स्थान नहीं है। तो बोले हमारा जीव क्यों लाया गया फिर? तो उन्होंने भी अंतर ध्यान होकर देखा तो एक जीव गलती से यमदूत ला के डाल दिया। So Guru Nanak Sahib also contemplated and thought about that soul, and he also realized that indeed his attention was not there on that soul, and even that soul's attention was not there. So by mistake, the angels of death, thinking that it is under their jurisdiction, took that soul and put him in hell. So then Guru Nanak Sahib went to liberate him, and when he went to the doors of hell, there the Lord of Judgment came out and told him, that this was not a place for him to come. But Guru Nanak Sahib said that I want to see your arrangements. I want to see and just look at your place. But again, the Lord of Judgment insisted that it won't be advisable for you to go in. But Guru Nanak Sahib said, then how come you have taken one of my soul and put him in your Kumbhi Narak? So he is inside. तो बाद में वो कहते हैं यमराज की भाई मैं छोड़ देता हूँ। कहते नहीं, जहाँ मेरा जीव है वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। So even the Lord of Judgment contemplated and felt and saw that indeed he had one soul who was an initiate of Guru Nanak Sahib. So he told him, okay, I will release him. You please wait. But Guru Nanak Sahib said that no, if he's inside, I have to go in and bring him out. तो गुरु नानक सीधा चले गए और वो ऊपर नीचे कर रहा था, गंदगी का पानी खोल रहा था, गंदा पानी, उसमें वो आत्मा ऊपर नीचे कर रही थी। ये जाके अपना दाहिना अंगूठे का अंगूठा ऐसा टच किया तो कुंभी नरक ठंडा हो गया और उस जीव को सुमरन याद आ गया। So so Guru Nanak Sahib went inside and saw that that jiva was being put in that Kumbhi Narak, and that is a hell which is like a large a pot of very filthy material, and it is boiling, and that jiva is put inside that. And when Guru Nanak Sahib saw that, he dipped his toe in that hell. तो कहते हैं फिर उसको सुमरन याद आ गया और सुमरन करने से दूसरा, उसका सुन के दूसरा, उसका सुन के तीसरा, तो एक दूसरे का सुन के लोग सुमरन करते हुए वहाँ से खाली होते गए, सब निचले मानव शरीर में आ गए। So as soon as he dipped his toe, that jiva started remembering the Simran, and he started doing his Simran, and he got released. Listening to his Simran, the other jivas also started doing that Simran, and they also started getting released. So like that, all the jivas there started getting released. तो कहते इस तरह नरक ही खाली हो गया। तब से फिर धर्मराज ने यमदूतों को हिदायत दिया है कि कोई भी गलती से संतों का जीव लाके नहीं डाले। And after that, all the jivas in the hell, all of them got freed, and all of them got a human life. And after that, the Lord of Judgment instructed all the angels of death that they should not bring any jiva of any initiate of a saint in hell. तो कहते हैं जो ऐसे जीव होते हैं
कि नाम लेकर के भी बुरे रास्ते पे चलते हैं, खाना पीना करते हैं, तो संत क्या करते हैं, खुद तो नहीं आते, यमराज को हुक्म देते हैं कि हमारा एक जीव ऐसे गांव में शरीर छोड़ने वाला है, उसको आप जाके रक्षा करके और किसी सत्संगी का घर बता देते हैं कि वहाँ पैदा कर दो. So sometimes even now when initiates after taking initiation, they still continue on their own ways, and they um, do several bad deeds. Then the masters don't come to take them, but the angels of death also don't come. It is the Lord of Judgment who comes to take them. And then the saints instruct them where that Jiva has to be reborn. So they tell him the family in which that Jiva will be reborn and how that is to be done. So that Lord of Judgment then follows that instruction and does it. तो धर्मराज खुद जाते हैं और उस आत्मा को वहाँ पैदा करके इतिल्ला आके गुरु को देते हैं कि आपके जीव को आपके बताए जगह में पैदा कर दे. So the Lord of Judgment then does as per the instructions of the masters, and then they come and inform the masters that this Jiva has now been set for rebirth in the family that you have mentioned and the place that you have mentioned. तो इसलिए उसको एक जन्म फिर लेना पड़ता है, मानव शरीर में आना पड़ता है, और मानव शरीर में फिर पैदा होने के कारण से पहले गुरु का कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन नाम का बीज रहता है. वो बीज फिर दूसरे संतों के शरण में लेके जाता है जो उस समय मौजूद होते हैं. So when that Jiva is reborn, he's reborn. That connection with the earlier master who has initiated him, that cuts off. And however, the seed of Nam has been sown, and that seed of Nam takes that soul or Jiva back to the living master of that time, and he comes again on the path. So that way the saints give again a human birth for those who don't do good deeds after they are initiated. हाँ, तो कहते हैं खाली ऐसे जीवों को ही फिर पैदा होना पड़ता है. जो पैदा होता है उसके लिए गुरु दर्शन नहीं देते, क्योंकि गुरु दर्शन दिया तो उसका पैदा होना नामुमकिन है. तो इसीलिए वो कर्म ज्यादा होने से उसका भुगतान कराने के लिए अगले जन्म में संत दर्शन नहीं देते, धर्मराज को ही भेजते हैं, और उसके द्वारा ही करा. यमदूत को भी नहीं भेजते, क्योंकि यमदूत आएंगे तो मारपीट करेंगे. तो धर्मराज जो जजमेंट देने वाला है उसको ही भेजते हैं. तो वही जाके उनकी रक्षा करके वहाँ पैदा करके और गुरु को इतिल्ला देता, मैंने आपका जीव को आपके बताए जगह भेज दिया. तो इस तरह से चलता है. तो कहते हैं अगर जीव जो है रास्ते में है, भजन सुमरन हुआ ना हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रास्ते में लगा है, गुरु से थोड़ा प्रेम प्यार है, तो ऐसे जीव को लेने के लिए संत लास्ट में जरूर आते हैं. So for such souls, then the master doesn't come to fetch that soul, and because if the master comes and gives his darshan to the soul at the time of death, there is no question about a rebirth. That soul will never get a rebirth, and it will go to the higher planes. So the masters never come to fetch those souls which have to be sent back into this world, and instead they send the Lord of Judgment. Again, the angels of death are not sent, because if the angels of death come to fetch the soul, they will resort to beating up that jiva, and they are not sent. So it is the more gentlemanly Lord of Judgment who comes to take that jiva and give a rebirth to that jiva. So that is how this process happens. So the masters don't come themselves to take those souls. तो इसीलिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी आत्मा फिर इस दुख के समुद्र में ना आवे, इस जन्म मरण में ना आवे, फिर दुखी ना हो. इसके लिए सुमरन भजन रोज रोज करना जरूरी है. So even if there is a little love, though the soul is not doing, jiva is not doing simran or bhajan, but has little affection or love for the master,
then the master definitely comes to take that soul himself. So it is very important for us to have that love and affection for the master and do that bhajan simran which the masters tell us to do, and listen to the satsang, so that at the time of death, then the masters can come and fetch that soul. तो समय बहुत अच्छा है, वातावरण शांत है, हम सुमरन और ध्यान से जुड़े। The time is good and atmosphere is quiet. Let us get connected to Simran and Dhyan.